Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vaashishtha evening sessions. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 41वें दिन के सत्र पे है। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हथेलियां गोदी में आसमान की ओर रख दे, खुली रख के। एक साधारण सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे। गुरुदेव कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर लें। आवाहनम 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 पुनः पुनः। गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागरूक होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार और अभी भी थोड़ा जो अहम का भाव बाकी है, वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें।
मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग यदि गुरु कृपा से इसी क्षण मुक्त हो जाए तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश सेवा के लिए यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे से अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. Jai Gurudev. So once again, welcome everyone. Today we are celebrating the Bail Pora. That's the festival that is celebrated in some parts of the India, where the bullocks, which are usually doing a lot of seva in the farming, all the farmers celebrate this day by giving them a rest for the day and they worship them. So that's a very beautiful process usually observed in the villages by the farmers. So wish you all a very, very happy Bail Pora today. They even make the sweets like Puran Poli and all that. So that is how the celebration is done. So usually it is being said in India, the people keep on continuing every other day or every week. There will be some or other festival that will be there. And because of which people here in India do not get even time to depress. Always they are in the celebration mode. So let us continue that celebration mode. Yesterday itself we have celebrated the Teachers' Day. Today we are celebrating the Bail Pora festival. Tomorrow in the morning session, we will be completing 100 session. That will be 100th day. So tomorrow will be a concluding day for the morning sessions. So you all are invited to attend the same. You are welcome to invite even all your friends, family members. It will be open to all. So tomorrow also will be there is a celebration day. So let us join tomorrow morning. It will commence at 7:30. So you all are welcome to join. So let us begin with our today's session. Here right now what we are doing, we are going through a couple of pages, reading through the respective book, be it Marathi, Hindi or English, and then after that we present this session in English and Hindi right now in the evening session. So from day after tomorrow or probably the evening session for tomorrow itself will be conducted in one language. So I'll take a feedback from all of you. Which language do you want to keep for the evening session? Which language we want to keep it for the morning session? But there is nothing to worry. Even if we do not understand a particular language, we always have an option of creating a breakout room. One of us can voluntarily take a responsibility of the particular breakout room. And once we join that particular breakout room, the same session, because this same session will be conducted in the morning in one particular language, and the same session will be conducted in the evening in another language. So whatever the session that is conducted in the morning can be played in the evening in other language, and the session which is conducted in the evening can be played in the morning also. So nothing to worry. We will make an arrangement such that हिंदी और इंग्लिश में भी यह सत्र सभी को जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में मिल सकेंगे, यही हमारा प्रयत्न रहेगा। तो इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। कल इवनिंग के सत्र में कोई भी एक लैंग्वेज ले लेंगे। वो मॉर्निंग की टीम और इवनिंग की टीम आज जब सेशन अपना खत्म हो जाए तो आप सबसे फीडबैक लेके इवनिंग में कौन सा रखना है, मॉर्निंग में कौन सा रखना है, यह तय कर लेंगे। बट कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग ब्रेकआउट रूम का उपयोग कर ब्रेकआउट रूम में आप किसी एक लैंग्वेज में इसको सुन सकते हैं, मॉर्निंग का सेशन इवनिंग और इवनिंग का सेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। इस तरह से करके हम लोग वही सत्र को बरकरार रखेंगे दोनों दिन के लिए। तो इसको किस तरह से करना है वो देख लेंगे, थोड़ा टेक्निकली कैसे हैंडल करना है, बट अदरवाइज हम लोग इसको कर पाएंगे, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं। नाउ अभी आज का सत्र को शुरुआत करते हैं। पहले मैं इसको इंग्लिश में प्रेजेंट करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्र है आज का।
and then उसके बाद में इसका मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा. So let us begin with our today's session. We are in Utpatti Prakaran, where Vashishtha Muni is giving a very beautiful knowledge to Prabhu Ramchandra ji. He is literally giving the Atma Gyan, the Atma Bodh. By listening to this knowledge, by following that in our day-to-day routine life, one can get liberated, one can become free. So that level of knowledge, that the highest possible knowledge on this planet is been given to Prabhu Ramchandra ji, and there are many people who are associated there, who are sitting there, they are also getting this knowledge. So the first thing that Vashishtha Muni tells that this creation of this entire creation in a chronological order, and then we see how this entire universe is created, and then he said that it is just that the Atma, that consciousness, Shiva, Brahman is whatever we call that which we do not know. It just get the illusion that it wants to do something, and then it creates its own Chaitya and Chitra, the man, and it in its mind itself it is projecting all this universe. So this entire universe is just a mithya, it is just a maya, just an illusion. It's unreal world. That is what the main theme of Advaita philosophy, Vedanta philosophy. So with that theme, underlying theme, Vashishtha Muni starts explaining him detail one by one knowledge via multiple stories. So we have seen the story of Mandapa Akhyan, we've seen the story of Leelavati, Padmaraja, and Saraswati, how they see their past birth, current birth, and the future birth also. So even the Leelavati and Padmaraja and Vidurat Raja, all these characters which comes in the story, they keep asking question to the Saraswati Devi, and she also keeps on answering them, enlightening them. And same thing goes true with Prabhu Ramchandra ji. He also keeps on asking questions to Vashishtha Muni, and that sutra is continuing. Now to explain this further, we are now going through something called as Karkati Rakshasi Akhyan. No? So that is the story of Karkati Rakshasi, who is supposed to be she is a demon, and despite of being a demon, how she, by doing the tenas, the tapashcharya, by her own thinking, by her own vichara, that using that second principle of moksha ke dwarpal, no? Second principle of vichara, no? The second gatekeeper, the self-inquiry, through which she attains the Atmagyan. So despite of that, in the process, because of the past karma, when the Brahmadev is happy with her and pleased with her and wants to offer a boon, what she asks is a very petty thing. She becomes that Loha Suchika and Jiva Suchika, and then she keeps on troubling to the people. But then she realized, what is it that I have asked? I could have asked something else. So that is the impressions, that becomes very have a profound effect on even our present moment also. It is also said that all these effects can be erased via your current karmas, current efforts. So that is what exactly Karkati Rakshasi seems to do. She does the tennis one more time, and then tapashcharya karke. Then again she gets the Atma Gyan, the self-realization on her own. And again, with the blessings of Brahmadev, she is able to take her form back. And once she has taken this form back, she again sits for next 6 months just like that. She doesn't want to kill people just for the sake of her hunger. If she says that if that is what it is, ultimately I am not interested in keeping this body also. I will not do any injustice to anybody. So the Vayudev comes and guides her that, okay, what you can do, you can go and find the people who are not walking on this righteous path, on the path of the Dharma, and the people who are not following the Shastras, the knowledge, and their daily routine duties and karmas, and the people who are murk, you can even kill them also. So by listening to this knowledge, listening to this advice from Vayudev, the air, god of air, Vayudev, she now goes towards the jungle. So it is the scene is of a midnight, and she is just passing through a jungle. She sees there are two gentlemen coming up. One is Vikram Raja, he is the king of the kingdom called Kirat,
and his minister is also accompanying with him. So she becomes very happy. She says this, what is it that they are doing? Probably they are doing something bad. So that's why they are traveling in the night. So I will definitely get my hunger to be sorted out. So I'll kill them and I'll eat them. So with that notion, she goes there, but she just doesn't want to go. She want to try out whether they are really Atmagyani or they are on the other category where I can kill them. So now what happens? She tries to threaten them with all the different horror sounds, but those people doesn't seems to get frightened. In fact, they challenge her that what is it that you are doing? Are you trying to frighten us? Come on, come in front of us. What is it that you want? If you want to do the war, come and do it with people who are walking on the path of dharma. They don't do all this drama. They follow the very simple and straightforward path. Come in front of us. Tell us what you want. If you need any help, please let us know. Nobody has gone with empty hand from our kingdom or Vikrama Raja. The king is very kind enough. He will give you what you want. But please come ahead and tell us what is that you are looking for. Listening to those wise words, again she tried to threaten them, and this time the minister also responds to her. So with listening to all these things, she get an indication that probably these people are not what I thought. They seems to be knowledgeable. So now she happens to kind of appear in front of them, and then she introduces herself, asks for their introduction. The minister introduced them to her, and now she asks around 21 questions. She tells the intention, look, this is what it is. I do not want to kill people just like that. So I will be asking you a question. If you give the satisfactory answers, then I will leave you. If not, then I'm going to kill you. I am very hungry. So then she asks all those 21 questions, which are really spiritually enlightening questions, which we have gone through it yesterday. So I'll not repeat all the questions today, but we'll just go through. And I also requested all of you to go ponder upon it and try to find out an answers. What are your answers for them? And now today we will see what are the answers that minister and the king gives to her. That's a very, very solid knowledge is what we are going to see here. So I'll not go the question by question and kind of go through it. It's all available in the book, but I'll just touch base upon all the multiple knowledge points that are covered here. So let's become there. That the first thing that is being said here, that the Paramatma means the supreme consciousness, the ultimate observer. No, that is beyond the reach of our all the five senses, Panchendriya. No, it is Panchendriya Tit is what is being said. It is pare than this Panchendriya. It's beyond the limit of experience of the Panchendriya. Panchendriyas are meant to experience all the different Vishayas. Vishayas means all those different things that we see is the sense of sight, the sense of taste, the sense of listening, the sense of touch, and the sense of taste, the rasa gandha, and the sparsha, the drishya, the listening is sound, shabda, all this rasa gandha tanmatra, whatever the pancha tanmatras we have seen, it is all those, and their thing is to experience the world through those senses. So it is the beyond the capacity of all those five senses, Jnanendriya and Karmendriya, to experience that what it is. So it is beyond that. Also, it is being said that we cannot, it is avarnaniya. Avarnaniya means through words, we cannot explain what that is. It is only can be experienced, but not explained in words. It is not, can't be seen through your eyes. It's not through normal eyes, we cannot see it, but just using the Jnana Chakshu, we can just take the experience of the same. So that is the because of that what it is which we do not know. Whatever the name you call it by, it could be Shiva, it could be Brahman, it could be consciousness, multiple names, Atma, Paramatma, whatever it is. It is the Atindriya, means it's the beyond the
limit of your indriya. No, it is also in the form of anu. No, it's a very, very tiny, sukshma. So because of all these things, these definitions have been defined for that. But again, this is just for our sake of understanding. Art, exactly that it is beyond the capacity of us to explain it in words. No, so likewise, they continue to answer, the minister continue to answer couple of questions till 14, and after that, Karkati Rakshasi asked them to hand over the answer session to king, and the king also continued to answer them. So now we'll see cover. Maybe today we will not be able to cover all of them, all the answers today. So half of them will cover today and half of them will cover tomorrow, because you have to present this in 2 languages. The time frame that we get to present it is very limited. Because of that, we have to do, but this will be resolved from tomorrow. From tomorrow we'll get a sufficient time to present our sessions. So the first thing is that these arts, that what is it that that is in the form of anu. It's a smaller than the smallest and the bigger than the biggest. What is it that there are multiple such questions. So it is being said that this particular parama chidanu is what is called the ultimate swarup. It is it's sad as well as it is asad. It is appears. It takes the form of this world, which itself is unreal. No, but it also exists on its own. No, what that is. But it is said that whatever it is like akasha, it is like a space, which is actually does not have any vishayas in it. But at the same time, we cannot call that as a zero. Shunya. Shunya nahi hai. Shunya means nothing. No, it's not shunya. It is something. What that something is, we do not know. No, because that is what appears, that Chetana, that Chaitanya, that Atma, that Brahman, that Shiva appears to be there everywhere. But if we try to go and find it out through our senses, through our logic, we do not get what that is. So that is what is being said. No, so it is not that akasha, it is not that, but it is in the form of very small, tiny particle. Why does it appear that this particular jagat, drishya jagat, appears to us so real? No, it is just I said that there is an example of gold that is given here. Just like a gold, what if you ask somebody, this is what is this? So this is an ornament. And if the person does not see anything else beyond that, that is an ornament, then that's it. Everything else to him will look like ornament. He will never see that, okay, this ornament is actually a gold. And this is just a shape. Because of this particular shape, I am calling this gold either as this ornament or that ornament, depending upon what that ornament is. I'm just using different words to call the same gold as an ornament, whatever the name assigned to it. So exactly in a similar fashion, whatever the things that as an object we see all over this entire world, be it your body, be it your planets, be it your space, be it the 5 elements, everything is explained in the words. No, even though it is explained in the words and addressing some forms here, something for our understanding, in reality, if we go beyond these forms, ultimately it is just one consciousness. No? So very beautifully explained using this. But so if you see this ornament or that ornament, the underlying reality of the ornament is ultimately it's a gold. So that is what is being explained here. Also, because of this triputis is what is called, it is the same Chidano, it is the same Chaitanya, same Atma, which takes the root of this Drashya, the one who is observing, the Drishya, what is being seen, and the Darshana, means the process of seeing. In all these 3 experiences, it is the same, that same Chidano, same ultimate observer, which keeps seeing all these things. No? So because of this, it appears so real. No, because the one who is looking at it just see it as only the physical objects, that what they see and perceive through these 5 senses. Because of that only, they are so much stuck into that, they are not able to see the underlying
reality, which is the Brahman, the Chintan. Now then it is been also said that this, whatever we call that is Atma. No, in this there is no concept of uh, time, kala, desha, means this measurement of the distance. That concept does not exist there. No? But still, why do we feel? Why do we use it in a day-to-day routine life? All these things. So that is what is explained here. That is the question that Rakshasi asked. What is it that which does not have, which moves, yet it does not move? No? Which is sthir, yet not stable. No, the one which is not non-stable, yet it is stable. The one which is not appears to be stable but not stable. The one which appears to move but does not go anywhere, and the one which is appears to be at one place but still moves. So such questions are asked by Karkati Rakshasi here. So amazing, amazing, curious questions about this knowledge. So here the minister continued to answer these questions, that this particular thing, the unreal world, even though it appears to have the concept of desh and kala, to the reality, it's just happening in the chitta, and this concept of desh and kal does not exist. No, because of that, it is just a dream, it's just an unreal thing, and because of that only, even if one appears to travel so much, it actually have not traveled. Now, this is one viewpoint, no, considering this as a dream, and then just dropping the question, saying that this is unreal, this is just a dream. Now let us look at one more viewpoint to understand this in a better manner, where our logic and our buddhi also can comprehend it and acknowledge it. So let us take an example that, okay, if the person is here on the earth and traveling on the road, no? So if he see that if he's traveling on the road by car or by train, how much can he see the distance? He can see, okay, I have traveled from here to here. It appears like that, right? But if you just now change the viewpoint, and the viewpoint is 30,000-40,000 foot, let's say from the aeroplane, if you happen to see how much he has traveled, you can say, oh, he has traveled from here to here only. That's it. Here he has probably traveled so many thousand kilometers, and from the top you'll say, oh, he has traveled from here to here only. That's it. Nothing much. Now let us take our attention little bit above, that you have come out of the earth. Now you're traveling through a satellite or through a rocket and going away from the earth. Now earth starts looking like just a small ball to you. Now what that person has traveled from Rishikesh to Delhi, will that even matter on the ball? It will be just 1 centimeter, 2 centimeter, that's all. That much it is. Now let us take our attention even beyond that, where you go out of our solar system and the sun itself is appearing like a dot to you. What is the existence of our earth from that point of view? Nothing. Whatever this 1,000 kilometers that you have traveled here, from that perspective, have you moved? Not at all. You have not even moved even a tiniest distance. So that is what gives that if this whatever is happening here, the movement that is happening here, whatever you think that so many yojans and so much of distance and kilometers and miles and all that, if it is happening within me only, what is it that movement I'll feel about it? Nothing. So it is just the matter of this entire universe. If it is said to be in the udar means pit. If it is in the udara of this entire thing, that Supreme Shiva, Brahman, and that Chidano group, it is inside, encompasses in that. From that perspective, what is the movement here? So it is moving yet not moving. And it appears to be still, it's still continuously moving on its own, it's continuously expanding. No, so that is a very beautiful explanation given here, no, of the desh, means the measurement of the distance. So that is where it has been traveled. No? So even though it appears as if it is moving, in reality nothing is moving. Anyway, one viewpoint, it is imaginary illusion, nothing moves. And if say, even if you think that okay, it's moving, it is just relative in nature.
Now, from one viewpoint, it seems to be moving. If you just change your viewpoint, the movement itself disappears after some time. So very, very sapeksha, very, very relative in nature. Now it is also been spoken about the same thing about the timers. No, this is what we seen about the desh, means the location, defining the boundary and the distance and all that. Now it is being also explained about the kal, that is the time. So here it is said that something called as nimesh. Nimesh means apna palak jhapati, just with the blink of eyes, whatever that time is called, that time is said to be a nimesh, just on the blink of your eyelash. And then there is another concept that is said, it's a kalpa, means there is a lot of time that has been passed, thousands of years are passed, the entire creation is created and it is also going to disappear. That entire period is called as one kalpa. The creation and the destruction of the entire universe is called kalpa. Yeah. So those things also, it appears here that one is something which is very less and one is something which is very, 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 very big. You say that this nimesh and this kalpa is also just a concept. It is just a kalpana. It is just imagination. In reality, nothing of such thing exists. No, because why? What that is, it's being said that it is the adi, anadi, anta, means the one which does not have a starting point, the one which does not have an ending point. So there is no concept of yesterday and tomorrow. It is just there right now. That's it. It is just being right now. So there is no concept of time here. So because of that, whatever these things appears to us as a time small and big, in reality it does not exist. No, because it is just an imagination somewhere, and the moment that dream stops, you vanish. Now this is one viewpoint, saying that everything is unreal, and now this is does not appear. Now just to make us understand, let us understand it from another viewpoint also. What could be that viewpoint? The viewpoint is that we have an experience of watching a dream and looking at multiple scenes, and that is which cannot be covered in such small time frame, and we happen to see everything in a dream, and the moment we come out of a dream we experience so many years or so many months or days of experience altogether, and you see that you have just stayed for half an hour or 1 hour. That is giving us the glimpse of what this knowledge is trying to tell us. Now let us take few more examples like this. Don't we get an experience that when we are happy, that point of time, it appears that so many years are passed just like that without we being able to notice it. And on the contrary, when we are sad, even the small period appears like very big yug. No, time doesn't pass. Haven't we seen that whenever we are waiting for something, and that point of time, it appears that, oh, why this time is not getting passed? No, I'm looking forward to meet someone, your beloved one, and the time is not. There are so many Hindi Bollywood songs also there on this, waiting for such a long time. You just met her yesterday or him yesterday, and she said, oh, I have not met you from so many days. No, so this kalpana, this is very relative in nature, experience of a time either as a long or as a short is very, very relative in nature. So this is another thing that, so the concept of short and long is just a Brahma, it's just an illusion to us. No, so this is what it is. So something which is appears in the blink of eyes, and something which disappears in the blink of eyes, and something which seems to be there for the kalpa for somebody, and for somebody it appears to be just a blink of eyes. Now how is that? So this is another beautiful thing. So here it explained that, see, look at things at a different lokas. No? So it is being said that entire Manu, so whatever the thing that appears here, is just one muhurta for the Brahma. The entire life of the Brahma is just one day for the Vishnu. The entire lifespan of the Vishnu is just one day for the Shankara. And the Shiva, which is there beyond all these things,
is. So look at this time frame. So now if we look at it from a theory of relativity, even if look at it from the perspective of the science also, we can understand this, right? So something which the time frame which we see here, if you happen to see that same time frame, you go up in the sky and then come back with the speed of the light, the time you spend in that different thing away from the earth. And if you happen to come here, you spend just 1 hour there, but you happen to come here and more time is elapsed here. No, that is what the theory of relativity. That is why they say you can go into the future by doing this. You go there, you spend just 1 month, you come back here, n number of years are passed here. No, that is what is the theory of relativity. Einstein's theory of relativity. So using that also we can understand this concept of kala is also sapeksha. No, it is very relative with the view, with respect to the viewpoint. No, so that is very beautifully explained here, that one which happens within the consciousness itself, for it is just a stir, it is not moving, it is at the one place, and the one which is not dependent upon any kala. There is no concept of kali here. No, it is just exist on its own, it is just be. No, it wasn't there, it wasn't there, tomorrow it will not be there, it is just exist. No, so that is what is Adi Anant. No, so these are the samjal that is true. So again the question and answer continues there. Whatever which is very obvious, pratyaksha, no, despite of that it is asat. What is it that? No, so we already seen that this entire thing what we see through our 5 senses, it appears so real to your 5 senses, but actually it is not real. So all these things we already seen it in detail. So now let's move ahead. The other thing that is been asked here is, what is it that Agni, despite of being a fire, it does not burn anything, and what is it that which is the source of this Agni, and yet it does not burn anybody? What is it that? So it is said it is the same that Param Tattva, it is the same that Chaitanya Paramatma, which encompasses this Agni, this fire element. We have seen the creation of the universe, the creation of the space element, and then the air element, and the fire element, the water element, and the earth element. It is produced by the same, it is created out of the same Chaitanya. So that same Chaitanya doesn't burn it, yet this particular thing still have that energy. It seems to still contain that energy. So it is that thing, that is the prakasha, that is the source of that light, which gives the light to all these candles, diyas, and even to the suns and all the stars. So it is that ultimate, and it is that ultimate which doesn't burn anything, and yet it has all the power of all the Agni which has been given to the fire. So to that ultimate, even the Megha Drishti at the end of the Kalpa, even the Megha Drishti does not pause it, or does not extinguish it. That is what is being said here. Now this, again, what is it the quality of this Atma? Atma che rahasyamay. So what is it that the miraculous being? So it is being explained, this all these things. It is something which is very alabha to sight, cannot be seen with the sight, but we can just only experience it. In the hriday, in our heart, we can just only experience it. That is that Parama Prakasha. So it is that it is pare, it is different than all these other senses, 5 elements, and then the mind as a 6th element, and all these things. It is beyond that. That is what is being said here. Now here comes the turn of king. Ministers is asked to pause, and the king is asked to speak. So now the king also explains, talks about it, how this entire thing is there. That is this Pranama Pratyaya is what is said. It is because of the Chitta Swarup. What is this Jagat is what we are observing. It is just the Chitta Swarup. It is just being imagined by the Chitta. The something which just create with this Spuran. Spuran means just something that happens within this Chitta, and entire universe is created. And on the fall of that Spuran, a Spuran, they again lie. Means they again get
destroyed or dissolve in itself. So likewise, this particular thing cannot be explained. So that is what is said Adi, Ananta, Shashwat, the one which is there and always in continuous Swarup. That itself is the Swarup of the Brahma. That itself is the real Swarup of the Shiva. That is all being said here. So there are a few more things, but let us stop here. There are multiple such questions. We have covered the half of the question today, and the rest of the questions will come out tomorrow because we need to also present it in Hindi also. तो अभी हम लोग इसको थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं और फिर इस सत्र को आपके लिए हम लोग खुला कर देंगे चर्चा के लिए, या आपके मन में इसके लिए कुछ प्रश्न है तो हमने देखा कि हम लोग अभी उत्पत्ति प्रकरण में चल रहे हैं। वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को ज्ञान दे रहे, अलग अलग कहानी सुना के। हमने मंडपाख्यान देखा, पद्म राजा, लीलावती और उनकी कहानी हमने देखी, वहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में हमने करकटी राक्षसी की कहानी देखी, उससे भी हमें सीख प्राप्त हुई। और भी यह करकटी राक्षसी जो है वह वायुदेव के उपदेश से एक जंगल में जाती है। वहां पे उन्हें एक राजा और उनके मंत्री जो होते मिलते हैं। उन्हें लगता है अपना अभी पेट भर जाएगा हमारा, ये तो लगता है कि कुछ गलत इंटेंशन से घूम रहे, लेकिन फिर वो बोलती है कि मुझे तो टेस्ट करना चाहिए, मैं ऐसे ही इनको खा नहीं सकती, ये मेरे धर्म के अलग है, अनुसार नहीं है। तो वह उनको प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न हमने कल देखे। सारे के सारे मैं प्रश्न यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं, सारे प्रश्न बुक में भी अवेलेबल और अपने कल के सेशन में भी अवेलेबल। तो फिर उतना पूछ के उनको अपना प्रयोजन बताते कि देखिए मैं ऐसे से हूँ, ऐसे से मेरा कार्य है, यदि आप मेरे प्रश्नों का सही से उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगी, प्रश्नों का सही से उत्तर दे देंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। इस तरह से बता के प्रश्न वहां पे वो चैप्टर कल खत्म हो गया था। फिर आज हम लोग देखते हैं कि यह जो प्रश्नों के उत्तर है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मज्ञान का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो हम लोग एक एक करके इस वर्णन को देखते हैं। टोटल 21 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, उसके आधे प्रश्न को आज देखेंगे, आधे प्रश्नों को हम लोग कल देखेंगे। तो जो प्रश्न पूछते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है, करकटी जो पूछती है कि क्या है वो अनुरूप है और फिर भी वह सब जगह पे व्याप्त है, इतना छोटा होके भी। वह क्या है जो विषयों से परे है, वह आकाश है वही फिर भी अनाकाश है। वह क्या है जो इस दृश्य जगत में सब जगह पे व्याप्त होने के बाद में भी कहीं पे दिखता नहीं है, मतलब किस तरह से है। वह क्या है, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग। वह जो चिदानु स्वरूप है, जो एक ही क्षण में उसको कोई मतलब सब जगह पे स्थिर भी है और सब जगह पे मूविंग भी है, एक जगह पे दिखाई देता है और कई डिस्टेंस जाने के बाद में भी स्थिर लगता है। वह क्या है जो अभी है और कल नहीं है ऐसा भी लगता है, और कल है और आज अभी है ऐसा भी लगता है। ऐसा क्या है जो प्रत्यक्ष रूप में भी यहाँ पे दिखाई देता है लेकिन फिर भी असत्य है, सत्य नहीं है। हाँ, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पे प्रकृति ने उन्हें पूछे हुए, और इन्हीं का ज्ञान हम लोग अभी उनका आंसर देखते हैं। तो पहले जो अपने मंत्री रहते हैं वह आंसर देते हैं, फिर आधे सवालों के बाद फिर राजा इन सभी का आंसर देते हैं। तो सबसे पहले तो वह क्या करते हैं, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में करकटी राक्षसी प्रश्न पूछ रही है, उसके बारे में थोड़ा सविस्तर वर्णन करते हैं, और फिर एक बाय एक हर एक प्रश्न के उत्तर यहाँ पे उनके जो मंत्री है वो देते हुए दिखाई। तो बोलते कि जो परमात्मा है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, शिव कहते हैं, चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वह आत्मा, वह परमात्मा बोलते हैं यह अतीन्द्रिय है और अनुरूप है और सूक्ष्म है। ये सारी संज्ञा, ये सारी व्याख्या उसको दी गई है। तो कैसे अतीन्द्रिय माने क्या, तो अपने जो इंद्रिय है, जो पंचेंद्रिय है और जो अपने ध्यान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनके जरिए इसको देखा नहीं जा सकता, इनके जरिए इसको नापा नहीं जा सकता, इनके जरिए इसको हम लोग ये नहीं कर सकते, बट उसका सिर्फ खाली हमको क्या होता है, अनुभव हम लोग कर सकते। इसके जरिए हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, इंद्रियों के जरिए। वह सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसी को यहाँ पे अतीन्द्रिय, अनुरूप, सूक्ष्म से कहा गया है। तो वही परमात्मा की यहाँ पे सारी बातें चल रही। तो बोलते हैं वह जो परम चिदाणु है वह दिखने के लिए तो इतना अनुरूप सूक्ष्म दिखता है,
लेकिन उसमें सारा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह जो पूरा एक जो अपना अनुरूप है, उसी के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसी अणु के अंदर कितने सारे छोटे 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 और अनुरूप ब्रह्मांड उसके अंदर समाये हुए हैं। तो बोलते वह जो है आकाश स्वरूप, उसी को कहते हैं अनाकाश, बिकॉज वहां पे विषय तो नहीं होते हैं, लेकिन उसको हम लोग शून्य भी नहीं कह सकते, बिकॉज कुछ तो है जो इन सारी बातों का अनुभव लेता है। कुछ तो है जिसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये है और यह नहीं है। वो कौन है जो बोलता है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? व्हाट इज इट दैट? उस वही जो है वही परमात्मा है, वही अनुरूप स्वरूप परमात्मा है। इसको और आगे समझाने के लिए बोलते हैं कि कैसे यह दृश्य जगत इतना रियल लगता है। तो बोलते हैं जो लोग जो अपना सोने का अलंकार होता है उसको सिर्फ एक अलंकार के रूप में देखते हैं, वह उसके परे नहीं जाके देख नहीं पाते कि यह तो सिर्फ सोना है। यहाँ पे सिर्फ कुछ तो शब्द नाम से हम लोग उसको पुकार रहे, क्योंकि उसको एक विशिष्ट स्वरूप का हमने आकार दे दिया है। इसीलिए तो वो यह जो लोग इस ज्ञान को देख नहीं पाते, बोलते उनको फिर यह दृश्य जगत भी बहुत सत्य लगता है, बहुत रियल लगता है, और फिर उसी में वो लोग फंसे रहते हैं, उसी में वह लोग अटके रहते हैं। तो बोलते यह सिर्फ सोने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यह जो चित्त रूपी परमात्मा के चित्त में ही यह सब जो निर्माण हो चुका है, यह तो बस स्वप्न के भांति आभास है, और उसी को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का सहारा लिया गया है, और शब्दों से ही वह शब्द तैयार हो गए, और अलग अलग आकारों को हम लोग उनको शब्दों से उसको दिया गया है। इसीलिए यह जो असत्य जग होने के बाद में भी हमको इतना बड़ा सत्य लगता है। जब तक हम लोग सिर्फ उस सोने को सोने के रूप में नहीं देख पाओगे, तब तक यह जगत हमें, जगत में जो एक ही चेतना सब जगत में व्याप्त है, हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह ज्ञान हमें यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि कैसे इस अनोखे उदर में सैकड़ों अंतर, मतलब कई सारे माइल्स का अंतर भी हम लोग पार कर लेते हैं, और फिर भी लगता है कि हम लोग कहीं पे पहुंचे ही नहीं। तो यह कैसा भ्रम है कि जो लगता है मूविंग है लेकिन फिर भी स्थिर है, और जो लगता है स्थिर है लेकिन उसके अंदर फिर भी काफी सारी मूवमेंट चल रही है। यह कैसे अचंबा है? इसको भी थोड़ा इस तरह के प्रश्न करकटी राक्षसी ने पूछे रहते। तो यहाँ पे फिर वह देश और काल का जो कंसेप्ट है, जो हमने पहले भी इसको देख चुके, उसी को यहाँ पे दोहराते हुए मंत्री जी यहाँ पे उनके दिखते हैं, ये बताते हैं कि देखिए यह बहुत जो अपनी डिस्टेंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इतने कई सारे योजन की जो बात कर रहे हैं, यह एक व्यू पॉइंट बताते हैं कि एक व्यू से तो यह सब सिर्फ स्वप्न रूप है, चित्त में ही यह है। तो चित्त में कहाँ का डिस्टेंस? चित्त में कुछ डिस्टेंस नहीं होता है। आप तो मनोरूप से जस्ट ऐसे उड़ सकते हैं, कई कल्पों तक जस्ट ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं सूक्ष्म सटल बॉडी से। कोई मैटर नहीं करता ना, टाइम का कोई बंधन वहां पे होता नहीं है। यह एक व्यू पॉइंट बताया गया। दूसरा व्यू पॉइंट बताया गया कि देखो, जैसे हम लोग थोड़ा समझने के लिए, अपने को थोड़ा और एलाबोरेट करने के लिए हम लोग और एक व्यू पॉइंट देखते हैं कि जैसे कोई अपना दिल्ली से, ऋषिकेश से दिल्ली निकल गया, तो वहां का डिस्टेंस है, रोड पे चल रहे हैं, तो लगता तो है कि इतने सारे किलोमीटर हमें जाना है, और इतने सारे किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया। अब इस व्यू पॉइंट को थोड़ा सा निकाल के हम लोग थोड़ा सा एरोप्लेन के 30,000 40,000 फीट ऊपर से देखते हैं, तो दिखेगा अरे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अरे यहाँ से निकला यहाँ पे गया बस। और थोड़ा अपने आप को आकाश में लेके जाते हैं, थोड़ा अपने सूर्य मंडल से बाहर निकाल के लेके जाते हैं, तो सूर्य ही जहाँ पे अपने को एक बिंदु के भांति दिखेगा, वहां से पृथ्वी का क्या अस्तित्व रहेगा? वो तो बिल्कुल अणुमात्र रूप में दिखेगी या नहीं दिखेगी। वहां से देखा जाए तो कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। माने मूवमेंट होने के बावजूद भी वहां पे कुछ भी मूवमेंट वहां पे नजर नहीं आएगी। सो यह देखते हैं कि यह जो मूवमेंट है यह बहुत रिलेटिव है, बहुत सापेक्ष है। तो इसका जो व्यू पॉइंट है वहां पे देख के देखोगे तो आपको मूवमेंट दिखे भी और व्यू पॉइंट को चेंज करना तो मूवमेंट नहीं भी दिखेगी। तो इतने सुंदर तरीके से करकटी राक्षसी का यह जो कॉन्सेप्ट ऑफ देश होता है, जो डिस्टेंस होता है, बाउंड्री होती है, उसका यहाँ पे मंत्री उनको यह उत्तर देते हुए दिखाई देते। अभी वो इसी के बारे में और भी पूछते कि वह कौन सा ऐसा काल है जो पहले भी था, अभी भी है, जो काल के परे है, जो काल से बंधन में नहीं है, ऐसा क्या चीज है?
तो फिर से वही बताते हैं कि जो उसी के बारे में आप बात कर रहे हो, यह आत्मा के बारे में, कि यह आदि है, अनादि है, अनंत है, ना इसका कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड पॉइंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि यह कल था और आज नहीं है, आज है और कल रहेगा, ऐसे नहीं। ये सदैव है, कोई कल नहीं है और कोई कल नहीं है, दोनों कल भी नहीं है, ये बस है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे। तो बोलते देखो, जो अपना जो अपना पलक झपकना जिसको निमेष कहते हैं, और बोलते जैसे एक सृष्टि का क्रिएशन, ब्रह्मांड का क्रिएशन, और उसका अंत कल्प, कल्पांत बोलते हैं, कल्प का अंत हो जाता है तब तक। तो बोलते ये दोनों कैसे लगते हैं, ये बहुत लगता है छोटा, पलक झपकना बहुत छोटा लगता है अपने को, और कल्प माने बहुत बड़ा, अपनी आयु ही 100 साल, 80-90 साल की, तो अपने को कल्प कैसा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। और पलक झपकना अपने को लगता है बिल्कुल छोटा लगता है। लेकिन बोलता है कि यह जो चीज हो रही है, यह बिल्कुल एक मिथ्या है, बिकॉज ये वैसे भी चित्त में ही हो रहा है, तो इसका कोई ऐसे अस्तित्व, काल का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, यह मिथ्या है। एक व्यू पॉइंट हो गया। अभी इसको थोड़ा और समझने के लिए हम लोग थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं, कि जैसे हम लोग कोई स्वप्न देख रहे हैं। अभी स्वप्न के अंदर आपने आधे घंटे में स्वप्न देखा, लेकिन कई महीनों का अनुभव स्वप्न ने ले लिया। जैसे ही स्वप्न खत्म हो गया, आपको लगा रही और आधा ही घंटा हुआ है ना, आपको एक अनुभव तो ले लिया 10-11 साल का, कितने महीनों का। तो कैसे है, रिलेटिव है। जैसे हम लोग स्वप्न में है तो काल का कोई बंधन नहीं, जैसे ही वहां से बाहर आ गए तो काल हमें लगा आधा घंटा ही हुआ है। तो कैसे रिलेटिव है, देखो सापेक्ष है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि जो अपनी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फ्यूचर में भी, भविष्य काल में हम लोग जा सकते हैं, वो टाइम मशीन को बना के। यह जो कॉन्सेप्ट जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो जो समय यहाँ पे बीतता है पृथ्वी पे, यदि हम लोग थोड़ा आकाश में ऊपर चले जाए तो वहां का जो समय होता है और यहाँ का जो समय होता है, उसमें कितना अंतर होता है। कहते हैं जो अपने मनु का यहाँ पे जो समय होता है, उतना समय पूरा बीत जाता है पूरा, वह ब्रह्मा का सिर्फ एक मुहूर्त होता है। ब्रह्मा का पूरा जीवन बीत जाता है तो विष्णु का सिर्फ एक एक दिन होता है। विष्णु जी का पूरा जीवन बीत जाता है तो बोलते शंकर जी का सिर्फ एक दिन होता है। और फिर जो शिव है वो तो परे है सब चीजों के, वो जो ब्राह्मण है वो शिव है, चेतना, कॉन्शियसनेस, परमात्मा जो भी कहे, वो इन सब बातों से बहुत परे है। तो कैसे देखो को सापेक्ष है, अलग अलग लोक में अलग अलग यहाँ पे उसका अनुभव हमें होता है। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सुख में होते हैं तो कैसा लगता है, कितने सारे वर्ष बीत गए, ऐसे ही जस्ट लाइक दैट बोलते ही है हम लोग, अरे कितने सारे महीने बीत गए, कितना बड़ा हो गया तू, अरे कितने सारे दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो यह अनुभव समय का जो है, यह समय का अनुभव भी बहुत रिलेटिव है। यह समय का अनुभव भी बहुत एक जस्ट अपना एक अनुभव ही है, सच्चाई में ऐसा समय का कुछ नहीं है। तो एट द सेम टाइम कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट भी यदि हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे जो दुख में होते हैं या जो किसी की वेट कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि अरे यार ये टाइम गुजर ही नहीं रहा है, कब से मैं बैठा हूँ, कब से मैं राह देख रहा हूँ, आ ही नहीं रहे, ऐसा लगता है बड़ा लंबा समय बीत गया। जो अपने प्यार करने वाले होते हैं, उनको भी जब राह देखते तो बोलते कल ही मिले थे, और बोलते कि पता नहीं कितने सालों से मिले ही नहीं आपसे, कहाँ पे हो आप, कितने दिन से आपका चेहरा ही नहीं देखा। तो बोलते किसी की राह देखते हैं तब भी काल यह बहुत लंबा लगता है, भास होता है, एक्चुअल में इट्स ऐसा कुछ लंबा नहीं होता। तो उससे भी इस पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं। तो बोलते यही है भूतकाल जो भविष्य काल होता है, चैतन्य के पर्सपेक्टिव से देखो तो यह इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नो, जो निमेष मात्र में भी यहाँ पे कल्प बीत जाते हैं, किसी के निमेष मात्र में भी यहाँ पे कल्प बीत जाते हैं, और किसी के कल्प अपने कल्प में उसके लिए तो जस्ट एक निमेष मात्र, एक पलक जब तक ही सब कुछ हो रहा है। तो यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया। और यहाँ पे और एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री दिखाई देते कि जो प्रत्यक्ष दिखता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसा क्या है। हाँ, तो यहाँ पे फिर उसी की बात करें कि अगेन आप परमात्मा की ही बात कर रहे हो, जो परमात्मा है, जो अपने जो पंचेंद्रिय है, जो अपने कर्मेंद्रिय, जो नाक कान, अपने आंखें, अपनी त्वचा और अपनी जो टंग रहती है, जीवा रहती है,
और उसके जो ज्ञानेंद्रिय रहते हैं वो गंध, शब्द, दृश्य, स्पर्श और रस, ये जो ज्ञानेंद्रिय रहते हैं, इनके जरिए से जो विषयों का हम लोग आकलन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको जो परिपूर्ण करता है, जो सामर्थ्य देता है, वह शक्ति, वो ज्ञान की शक्ति, वही आत्मा है। ऐसा यहाँ पे कहते हैं। बट वो बोलते हैं इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों के यह परि है, उनके अतीत है। इसी की वजह से यह जो दृश्य दिखाई देता है, उसके बावजूद भी यह दृश्य असत्य है, असत है। इस तरह से यहाँ पे इसके बारे में, दृश्य जगत के बारे में कहा गया है। तो बोलते फिर यह दृश्य जगत हमें इतना ये क्यों लगता है? तो बोलते वही बात हो गई जो अपने गोल्ड के बारे में देखा कि हम लोग देख नहीं पाते, उसके परे कि यह सिर्फ गोल्ड है, अलंकार को ही देखते, वैसे बोलते हैं दृश्य जगत के बारे में भी वही हमारे साथ हो जाता है। यह जो ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, इनको हम लोग जो शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, यह हमें लगता है कितना सच है, बिकॉज हम लोग उसके परे जो तत्व है, जो गोल्ड है, रियल गोल्ड, जो आत्मा है, उसको हम लोग देखते नहीं है। इसीलिए हम लोग यह दृश्य जगत हमें लगता है कि यह बहुत सॉलिड है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर यही चीज आगे भी चलती है, आगे के प्रश्न भी बोलते हैं। फिर वो राक्षसी बोलती है, आपके मुख से तो मैंने सुन लिया, आप तो ज्ञानी हो, अभी मैं राजा के भी मुख से कुछ सुनना चाहूंगी। तो फिर आगे के प्रश्न राजा के ऊपर छोड़ देते, तो फिर वो आधे प्रश्न हम लोग कल के सत्र में कवर करेंगे। अभी के लिए यह सत्र मैं आपको सौंप देता हूँ। आप अपना अनुभव इसके बारे में जरूर व्यक्त कर सकते हैं, या यदि आप आज के सत्र के बारे में आपको कुछ प्रश्न है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू, मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम देता हूँ। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन आपके लिए खुला कर दिया है, आप खुद ही अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ संगीता जी। I'm waiting if anybody has a question or something. That's it. Sure. रेबा जी, शलाका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उषा जी, सूर्या जी, तृप्ति जी, सविता जी, सचिन जी is also there with us. सचिन जी। Oh. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए। मुझे ये प्रश्न पूछना था कि कर्कटी या विषुचिका, हम इसको बोल सकते हैं क्या कोविड विषाणु को? हाँ, अभी ऐसा अस्तित्व मानते हैं कि विषुचिका अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, और इन में हमारे पास आती है। तो यह विषुचिका का ही रूप है जो अलग अलग रूपों में आके हमें तकलीफ देता है। तो विषुचिका का भी रूप कर सकते हैं जी। उसमें लिखा है कि अगर धर्म से लोग अच्छा धर्म का पालन करते हैं तो उसे आज्ञा नहीं है विषुचिका को उस व्यक्ति को तकलीफ देने की। बिल्कुल तो सही। हाँ, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, इसीलिए कहते हैं ना, अभी यहाँ पे अच्छे कर्म करते माने कौन? जो अपनी रोग कारक प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा के रखते हैं, वो अच्छे कर्म हो गए। जो लोग आराम से रोज उठ के प्राणायाम करते हैं, 30 मिनट ऑफ वॉक करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, तो यह विषुचिका शरीर के अंदर घुस तो जाती है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाती, कुछ नहीं करती। वो 10-15 दिन क्वारंटाइन हो गया, बस आपको मुक्त कर देती है। तो यही अपना धर्म है, यही अपना कर्म है। तो इन कर्मों के ऊपर, इन धर्मों के ऊपर शास्त्रों के अनुसार जो अनुसरण करते हैं, उनको यह विषुचिका तकलीफ नहीं देती। ये वो ग्रसित हो भी जाते हैं तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको। तो इसलिए इट्स वेरी कीप आवरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी, वॉक ऑन द राइटियस पाथ। जिसी को अपना we need to be on the path of dharma। तो इस एंगल से जस्ट वन व्यू पॉइंट इस तरह से देख सकते हैं इसको। देयर कुड बी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आल्सो। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रेबा जी, आपको कुछ कहना है?
actual it is already heard this story from morning session and evening session. This repetition is good for recalling or remembering. It is good, and many experience I have. I have corona positive on November month, but due to Gurudev grace, I am not admitted in hospital, just remain in my home and taking Ayurvedic medicines, Kavasutudina and Amrut, and every day, just from morning time, I am really feeling sick, but just 5 p.m. or 1:10 p.m. I just feed for that I am already full okay, and I cook my food for me only. Actually, I am alone in my home. Just 1 p.m. or something, I feel very good, no feeling sick, and I am cook my food and I take my bath and I eat my lunch, and then again I am feeling sick and even in my bed. And this time from 28th November I am having corona, and from 28th November I attend actually AMP course, online AMP course, but during AMP course I maximum time I remain in my bed by lying condition, actually feeling very sick, but I completed my AMP 29th and 30th November, and 1.5 weeks I feeling sick, but after that I regain my health. It's Gurudev grace. Every day I am feeling okay during 1 p.m. this time, and my food for my own. It's Gurudev grace. Very nice. That was a really wonderful sharing and very Rebaji. Very nice, Rebaji. Thank you so much. We have Usha ji and Milin ji also with us. Usha ji, would you like to say something? हाँ, मुझे हिंदी में जो सेशन रहता है तो उसको सुनने में ज्यादा अच्छे से समझता है। इंग्लिश में कभी कभी कुछ वर्ड्स वैसे नहीं समझ में आते हैं और फिर मन कहीं और चला जाता है, तो फिर पूरी तरह से पॉइंट कवर नहीं हो पाते हैं। तो हिंदी में रहे तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे मैंने इंग्लिश में भी सुना हुआ है, मतलब वो पहले भी मैंने ये सेशन में बताया था कि वो नकुल धवन जी का, तो तब से मेरे लिए लाइफ को मैं वंडर की तरह से देखने लगी हूँ। पर मन फिर वही है कि क्रिया साधना नहीं करो तो छोटी छोटी बातों में अटक जाता है। किसी ने कुछ बोला तो फिर मन में वही चलते रहता है। तो आई एम सीइंग माई सेल्फ इन अ वंडर कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो और छोटी छोटी स्टोरी पता है मुझे, पर पूरा डिटेल तो मैंने पढ़ा नहीं। और सही बात है कि वो बुक ली हुई थी तो इतनी बोरिंग लगती थी कि पढ़ने का मन ही नहीं होता है, बट ग्रुप में जब सुनते हैं तो सब चीजें समझ में आने लगती है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि ये सब चल रहा है और वो ज्ञान में जी रहे हैं। पर अभी तक ऐसा लगता है कि मन अटकता है चीजों में, तो वही है कि सुनते रहने से ही सब होगा, ये समझ में आता है। बहुत बढ़िया उषा जी, बहुत नाइस एक्सपीरियंस। और गुरुदेव का तो प्रॉमिस है ना, इस जन्म में मुक्त हो जाओगे। हाँ, मोक्ष और मेरे मन में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब मुक्त हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और फिर मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने कि जब मुक्त हो जाते हैं तो उनका मुक्तों का बिहेवियर कैसा रहता है। तो बोलते कि जो हमने यहाँ पे आकाशज की भी कहानी देखी थी, तो जो आकाशज जो रहते हैं वो एक ब्राह्मण रहते हैं, ऐसे बताया गया है, और उनको मृत्यु मार नहीं सकती। तो क्यों मार नहीं सकती? तो बोलते मृत्यु आती ही है इंसान को उनकी कर्मों की वजह से। अच्छा, कर्म माने क्या? कर्म माने सिर्फ एक्शंस नहीं है। कर्म माने उससे एसोसिएटेड जो एक्शन जो आपने किए, उससे एसोसिएटेड जो अपने ऊपर इंप्रेशंस तैयार हो गए। माने जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी और मिलिन जी अपने साथ है, और मिलिन जी ने कुछ तो मुझे बुरा बोल दिया, अरे यार क्या बोरिंग सेशन होता है, क्या लगता है, कुछ तो होता है, कुछ तो नेगेटिव कमेंट मुझे दे दिया। अभी मैं सोमेश्वर यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ, उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया,
और मेरे मन के ऊपर उसका गहरा असर हो गया, हो गए कर्म, हो गए इंप्रेशन, नो। ऐसे कुछ भी चीज, मतलब इट्स नॉट जस्ट माई एक्शन, इवन अदर पीपल्स एक्शंस और द परिस्थिति और द ऑब्जेक्ट्स, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस और बीइंग डन बाय मी, none of that is going to create any sanskara on me. That is referred as कि उसको कर्म नहीं हो रहे। तो जो आकाश जो अपने एक्शंस करते हुए दिखते, फॉर एग्जांपल जब हम लोग टॉयलेट को जाते हैं, क्या कर्म होते हैं अपने टॉयलेट को? कुछ नहीं, यूरिनेट करते। व्हाट इज द कर्मा वी आर डूइंग देयर? नथिंग। नथिंग। योर हार्ट इज बीटिंग, व्हाट कर्मा आर वी डूइंग देयर? नथिंग। No karma is happening. Although the actions are happening, there is no karma happening here. There is no impression that is created. It is just happening as though nothing. Happening as though it is just the part of your routine, your life. So you are doing it, but there are no impressions getting created either as a good or bad. दोनों भी नहीं, ना बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है, ना बहुत असमाधान का अनुभव। वो समाधान, वो कंटेंटमेंट, वो तृप्ति शुरू से लेके आखिरी तक, वो स्थित प्रज्ञ, ना बहुत ऐसे रोते हुए दिखाई देते हैं, ना बहुत ऐसे हर्ष में पागल हो गए ऐसे नहीं। ये जस्ट बैलेंस एंड यू आर डूइंग ऑल योर एक्शन एंड देयर आर नो इफेक्ट ऑफ योर कर्मा आर हैपनिंग। यह मुक्तों के लक्षण होते हैं। और फिर जो ऐसे मुक्त होते हैं वो क्या करते हुए दिखाई देते हैं? जस्ट एक बार पीछे जाके देख लो कि क्या करते हैं ऐसे मुक्त। वो अपने जो जिम्मेदारियां उसको निभाते हैं, खुद की भी जिम्मेदारी निभाते, दूसरों को भी जिम्मेदारी लेते हैं। बुद्ध के बारे में देखें, राम जी के बारे में देखें, कृष्ण के बारे में देखें, अभी अपने गुरुदेव इनके बारे में देखें, क्या कैसा वर्तन है इनका अपनी लाइफ में। यही मुक्तों का लक्षण हो सकता है, सिम्टम। अपने लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि त्रिगुणा सहित, माने इस जन्म में अपने सामने गुरुदेव है और हमें देखने को मिल रहा है कि जो मुक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। अपने सामने कई सारे मुक्त हो गए हैं ना, संत गाडगे महाराज ना, गजानन महाराज, साईं बाबा। वो सब कहाँ पे रहते हैं? मतलब आकाश में? आकाश में। अच्छा, मैं यदि आपको स्टोरी बताऊं कि आप रात में यहाँ पे जा रहे हो और फिर रात को आपको ऐसा लगा, आपने देखा कि वहां पे एक सांप है, तो आप डर गए, आप रुक गए, लेकिन आपका साथीदार थोड़े क्षण में वहां से लौट के आया और उन्होंने वो टॉर्च में आपको दिखाया कि अरे वहां पे तो रोप पड़ा हुआ है, वो कुछ तो हिल रहा था हवा की वजह से। और देन आपको ज्ञान हो गया कि यह डोरी नहीं है, रोप नहीं है, यह तो नहीं, सांप नहीं है, तो डोरी है, नहीं तो रोप है। उस क्षण वो सांप कहा जाता है? वो अपना भ्रम था, सांप तो था ही नहीं। पर ये सब अच्छी आत्माएं तो है ना, पर अब कहाँ है वो? हाँ, तो आत्मा मल्टीपल थोड़ी है, आत्मा अलग अलग थोड़ी है, सभी में उसी चेतना का स्वरूप एक ही स्वरूप है। सारे ब्रह्मांड में एक ही चेतना बसती है, तो वही चेतना में विलीन हो जाती है, वही होता है। तो इसको मुक्ति के दो स्वरूप भी यहाँ पे बताए गए। एक तो बोला गया है विदेह मुक्ति और एक बोला है सदेह मुक्ति। तो एक जो होते हैं कि जो मुक्त होते हैं, जैसे व्यास मुनि के बारे में इसी योग वशिष्ठ में बात की जाती, तो उनको तो वो सदेह मुक्त थे, वो मरे ही नहीं एक्चुअली। लेकिन उनका जो पुत्र था शुकदेव, वो विदेह मुक्ति, या हमने जैसे पद्म राजा की और लीलावती की कहानी भी सुनी, जब तक वो ज्ञान में नहीं थे तब तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते थे, वासनाओं की वजह से नया जन्म इमेजिन कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वो ये ज्ञान हो गया, सरस्वती देवी ने उनको ज्ञान दिया, तो फिर क्या हो गया, आखिरी में जब वो पास ऑन हो गए तो उनकी विदेह मुक्ति हो गई, मैंने देह भी चला गया और उनकी मुक्ति भी होगी। तो वही परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं, वही कॉन्शियस नहीं में स्थित हो जाते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। Add to that, Usha ji, it's an example of pot. एक मटका होता है ना, तो मटके के अंदर का आकाश अलग होता है और बाहर का आकाश अलग दिखता है, isn't it? बट वो मटका फूट जाए तो क्या होता है, आकाश कहाँ जाता है? उसी में विलीन हो जाता है, एक ही हो जाता है, सेम ही था, वो स्टेप चलेगा बस। वो मटका जो है वो बीच में आता है। एक्चुअली आकाश एक ही है, अंदर भी एक है, बाहर भी एक है, बट वो मटका बीच में आता है। इसी तरह से ये शरीर बीच में आता है, बट आत्मा जो है वो यहाँ जो भी है वो बाहर है, वो एक ही है। ऑल एवरीथिंग इज वन। सो जब नजर वन में होगी तो वो मैनी से निकल जाती है। ओके,
और क्या होता है जब बुक हो जाते हैं तो वही हो जाते हैं, मटका टूट गया। another example you can take, हम अकाउंट रखते हैं ना, बैंक बैलेंस रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ बैंक में डालते हैं, कुछ निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं, चलता रहता है सिलसिला, isn't it? है ना? लाइफ टाइम सिलसिला चलता रहता है। अब हमको अकाउंट अगर बंद करना है तो हम क्या करेंगे, हम डालना बंद कर देंगे, जो है वो निकाल देंगे, isn't it? Simple. Same is your karmic account. What we do is we come here with some of your Sanchit Karam, and then what we do, some of your Pralbodh Karams also there, and then you do some fresh Karam. That is every day you make new Karams. Okay. Abhi ye chalu hai silsila, going and putting and coming out and all. But now what you are going to do is stop putting it inside. Means whatever you are doing with your awareness. And that awareness is the light, that luminous awareness, that consciousness which is there inside us. Okay, so with that consciousness, if you do the karmas, then your karmas are not added in that, because you are in your consciousness, that awareness. So धीरे होता है। आप देखेंगे किसी के जीवन में ऐसे भी होता है, एक लास्ट जन्म होगा तो इतने सारे कर्म एक साथ उसको भोगने पड़ते हैं। What is it that for? To make him free from that bondage. Okay. Yeah. So that is the point. Yeah. I hope you got it. Hey, समझ गया भैया. I got. Thank you. Thank you so much, Sangeeta ji. That was really beautiful. And thanks, Susha ji, for asking these questions. प्रश्न पूछते हैं तो चर्चा होती है और भी थोड़ा संतोष से सुनने को मिलता है। जैसे भी संगीता जी ने कितना बढ़िया पॉइंट रखा। अपने साथ मिलिंद जी भी है। मिलिंद जी, would you like to say something? I just want to understand कि ये knowledge आपने बताया, अभी संगीता जी ने भी बताया, how to remain established in this knowledge forever. मतलब वो कभी दिमाग में आता है, अभी लेक्चर सुना तो रहता है मन में, लेकिन डेली रूटीन में रहता नहीं है, तो कैसा एस्टेब्लिश हो इसमें, मतलब? तो इसका उत्तर हमें पतंजलि योग सूत्र में भी मिलते हुए दिखाई देता है कि कोई भी चीज को हमको यदि उसको फर्मली एस्टैब्लिश करना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। सेल्फ एफर्ट से हम लोग उसमें एस्टैब्लिश हो सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोग ब्रश करना नहीं जानते थे, अपनी माँ ने अपने को सिखाया, लेकिन फिर भी नहीं आता था, तो माँ ने क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने को ब्रश करवाया। एक दिन के बाद क्या हो गया, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, रूटीन बन गया आपके लिए। अब आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता कि ब्रश करो, आप उठते हो ब्रश करते हो, अपने आप हो जाता है। तो कैसे हुआ ये, वो ब्रश जिस तरह से करना सीखा वही तरीका इसके लिए भी है। तो कैसे, तो बोलते कि कैसे, सतो दीर्घ कालम मीन्स ओवर a period of time, निरंतर, without any gap in between, with satkar sevita, with full honor and respect towards the technique, towards the master, towards the knowledge, whatever it is, whatever you are practicing, having an reverence, having an respect and honor toward it. If you do this like this, then it becomes a dhrida nishchaya, then it becomes the firmly established. Okay. It is a practice that we have to do. Now this is one viewpoint. This knowledge is such that we can always see it from multiple viewpoints. For example, if I show you this, what is this? You'll say it is circle. Some object, circle. Right now it is just appearing to me as a circle. Circle, correct. That's it. But the moment I do it like this, okay. Some cylinder, right? So whenever we talk about any such knowledge now, it is based on one viewpoint. So whatever I explained you just now, it's a one viewpoint about it, how we can do it. It has also been said in the other context that if one is there, guru is there, and someone who wants to make you enlightened, now it is just the matter of, for them it is just the palak japakte. That is called as Shakti path. That is called as Parashakti. So Parashakti, the one who has created you,
what is the matter for them to enlighten you, है ना? So if that Parashakti wants you to be enlightened, it will make you just like that enlightened. No, so this is also another viewpoint that palak jab tak hi, some people realize. You do not see, probably there is so much of such things, but they appear to be. This third viewpoint kya? Oh, okay, even if you in this life you probably do not see they have done some karma, it is because of their sanchit karma. वही उनका प्रारब्ध बन जाता है. It is because of their past karma. Such things, at least सरस्वती देवी says that हम लोग सिर्फ यहाँ पे तथास्तु बोलने के लिए होते हैं. हमारी कोई इच्छा नहीं होती है कि कुछ आपके साथ हो. आप ही मांगते हो, हम लोग बोलते हैं तथास्तु. आप ही कुछ करते हो, हम लोग बोलते हैं तथास्तु. लेकिन हम लोगों का तथास्तु भी इतना पावरफुल होता है कि जो भी आप मांगते हो वही मांगते हो जो आपके पास्ट कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है. तो योग वशिष्ठ में जो दैव है उसको पूरी तरह से नकारा गया. बोलते हैं आपके पास कर्मा ही है, आपके स्वयं के सेल्फ एफर्ट ही है जिसकी वजह से आप मुक्त हो सकते हो. तो ये इसको भी एप्लीकेबल है कि मैं इस स्थिति में कैसे रहूं हमेशा. तो अगेन एंड अगेन, पुनः 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 पुनः, यू हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट. हाउ doesn't seems to happen is what the reality, what is that you facing, I am facing, we all are facing, we all are work in progress model. So how to do that? One point of time we feel like doing work, another point of time we feel like doing seva. How to balance between these two? One point of time we feel, when we come here we feel so good, we tend to understand everything. The moment we go out we tend to lose everything, again back to the square one. How to balance that? So Gurudev beautifully answers that we are driving a cycle. How do we drive a cycle? We don't discuss any theory about it. All automatically, subconsciously, what we do, you fall on one side, you automatically center of gravity, you आप इस साइड झुक जाते हो, you start falling on this side, आप इस साइड झुक जाते हो. ऐसा करते करते पहले 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन गिरते हो, आपके बाद उसके बाद में साइकिल चलानी आपको आ जाती है. फाइंड दैट बैलेंस अपने आप. और फिर उसके बाद में उसके बाद में भी आप गिरते रहते हो दोनों साइड. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Bicycling की it's an inherent scientific process which keeps happening. But are you aware about it? No, it just subconsciously happens. बस यही हो जाता है अपने साथ भी. When we walk on this path, एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आप हो जाते हो मुक्त, स्थितप्रज्ञ हो जाते हो, फिर आपका जीवन चलते रहता है. आजू बाजू के लोगों के लिए दिखता है ना, बंदे की दाढ़ी बड़ी है, बंदे की शादी वादी हुई है, बंदा जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट आप अंदर से आप शायद हो सकते हो कि गुस्सा भी हो जाए किसी. पूरा डेली रूटीन लगता है कि अरे चल रहा है, बट आप अंदर से मुक्त हो, ये भी हो सकता है. या ये भी हो सकता है कि आप मुक्त हो गए हो, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली जैसे गुरुदेव ने उठा ली है, और वो ऑब्वियस हो जाता है, फिर इट्स वेरी एमिनेंट दैट कि यू आर एनलाइटेंड. ये हो सकता है. तो ये प्रक्रिया है. तो लगे रहो मुन्ना भाई, चलते रहो, ये यही है. Beautifully explained. Yeah. Good. We also have Sachin ji with us. Sachin ji, would you like to say something? No, I think all questions, answers going very fine now. So I want to be in listener's mode today. Okay, so I can add. How many times in a day do you remember yourself कि I am Milind? How many times? आपको कोई रात को एकदम डीप स्लीप में भी बुलाए अगर, तो you just get up. Okay, I'm Milind. Right. Do you go in front of the mirror and tell, oh, I'm Milind, oh, I'm Sangeeta? No, we don't do that. कितना पक्का हो गया है. इतना छोटा बच्चा, उसके कान में खाली बोला गया कि from today you are Milind. पक्का हो गया है ना. अब भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते. एंड तक चलता है वो. इसी तरह से गुरु जब मिलते हैं ना, तो वो हमको बोलते हैं कि तू वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप. So we need to, be very firm in that. इसी तरह से जैसे हम ये नाम नहीं भूलते हैं, वैसे एक्चुअली हम हैं. इट्स नॉट कि गुरुदेव आके करते हैं कुछ. वी आर ऑलरेडी एक्चुअली सच्चित आनंद स्वरूप. But due to the veils that are here in front of me on the mind and all the thoughts and all the perceptions and everything, so I take myself into that small consciousness which I say ki I am Sangeeta, I am Milind. Now another thing very beautiful it is, how I take it. I go a step behind.
in my consciousness. And then you see how Sangeeta does the work. That's very beautiful. I love that. Oh, Sangeeta is getting angry. So, be a third person to your own self. Then you will come to know where you are in that consciousness, and then you see yourself. It's very beautiful. I can see everything. Oh, you're going in reaction, right? Good. So it's okay, you're going in reaction. It's not a bad thing. But then you come to know your moves where you are. So that is a very beautiful study, which I like to do it. And coming up to that, that day also I told him, immediately I told him it was a learning for me in this journey. I will be more in my awareness. So it was a great thing. It's okay, na? What is there? It's okay if you have a fall. It's okay. Again, you're riding the cycling. Again, you're getting that balance. So getting that balance also, it's a very great thing, na? See, even if you learn a car, you take at least 3 months to learn a car, na? And now how do you drive a car? It's so easy for you. Gaya automatic ho jata hai, because it becomes a reflex action. In this way also, of course, you have to take a driving this certificate. You have to give your exam. Everything is there. You need a coach for that. So we also have coaches with us. Be in that company. Come with us. Be with us. Slowly, you will get it. That's what it is. Yeah. Yeah, thanks a lot. Make it more light instead of making it more heavy. No? It's always to make it more light, more lively, and rejoice. Joy, it's the joy which has to come up, not a tension. Hi, abhi main kya karu? Not like that. Yeah. Abhi wo to sun liya, abhi ye to aata nahi, abhi kya karne ka? Nothing. You don't have to do anything. Just drop it. And you are that. That's it. We are holding on to something. That's why we are not getting that experience. So the need is to just let go. Yeah. Good. Yeah. Yeah. I hope you got your answer. Thank you. I love taking it very simple, light. I just love that. So in the morning, even if you get up and see you will remember this always. You won't forget. It is so engraved in your heart. This answer, because you will always have that, ki, okay, I am willing, nobody is telling me that. I think so. Okay, it means I should stop. Yes. Okay, so you'll get it. Next time you come, give us your experience. How do you feel that? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. So much. Great. So it's already 9:27. किसी का कुछ प्रश्न है या किसी को व्यक्त होना है तो जरूर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे समापन कर लेंगे। पुनः एक बार कल मिलने के लिए, जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया, कल से हम लोग एक ही लैंग्वेज को चूज करेंगे और एक लैंग्वेज को हम लोग परसों से मॉर्निंग में शिफ्ट करेंगे, इवनिंग में किसी एक लैंग्वेज को, तो विल गेट मोर टाइम टू डिस्कस मोर। अभी कैसे होता है, 2 लैंग्वेज में बात करके सत्र 1.5 घंटा हो जाता है। Probably we'll be able to finish everything in 1 hour, ना 45 minute of talk, 15 minute of thing। तो 9 बजे हमको we can conclude this and still yet do a justice to the session. With that note, समापन कर लेते हैं, जाते हैं। जय गुरु।